say hello and just introduce everybody really quick. So my name is Right. Rosie Barani. My name is Akbar Purani, and Okay. today we have someone with us who is widely considered to be the fastest bowler in world cricket. उनके fans उनको प्यार से रावलपिंडी एक्सप्रेस कहके बुलाते हैं. I'm talking about none other than the Pakistani cricketing legend, Shoaib Akhtar. Thank you so much for joining Thank you. us, Shoaib. Today we also have two amazing Pakistani personalities, Tamkinat and Taimur, who are also joining us. Welcome to everybody, and thank you for making the time to make this happen. Assalamualaikum. Aslam. Wow. Walaikum assalam. So we can dive right in. What is everybody's thoughts on the current World Cup, and who are you rooting for? Well, my thoughts, I'm finding it a little underwhelming this time. The hype that we used to see, मतलब पहले वो शायद उतनी hype, I don't know why कि नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है. But ये है कि of course I'm rooting for Pakistan. अगर वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो हाइप तो है. और जब एज अ क्रिकेट फैन मैं तो बस आप समझे कि 2-3 महीने से इसी चीज का वेट कर रहा हूँ कि यार एक वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा. और मेरे ख्याल से ज्यादातर पाकिस्तानी यही वेट कर रहे हैं. और ऑब्वियसली आई एम सपोर्टिंग पाकिस्तान. I think the World Cup hasn't started as yet. Let's put it this way. The World is going to be start on the 14th, Yes. which is in a couple Yes. days away. Yeah. So, this World Cup is all about India and Pakistan. Or if Pakistan beats India, if Pakistan crosses this obstacle, Pakistan will start to believe in a way that they can beat Australia and New Zealand and rest of the pack too. मुझे ये लगता है कि आई थिंक पाकिस्तान थोड़ा सा ना जिगरा दिल गुर्दा दिखाए और इस ऑब्स्टिकल को पार कर गया ना तो बाकी टीमें भाग जाएंगी पाकिस्तान से डर के, क्योंकि ये वो मैच है जहां पाकिस्तान कैन बी डिमोरलाइज्ड. तमकीनत की बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा डल स्टार्ट हुआ है टूर्नामेंट का, लेकिन ये डलनेस सारी खत्म हो जाएगी 14 तारीख को. तो अगर उनको उल्टा पड़ गया मैच तो फिर तो मेरा ब्लॉग आएगा बड़ा तगड़ा किस्म के इंडियंस के. तो मैं उनको बताऊंगा मैं. तो it is important for Pakistan. I'm hoping, my fingers are crossed. Seriously, honestly, I want Pakistan to win this game somehow. It looks very difficult for Pakistan. Let's be very honest with you. It looks very difficult. It's looking like impossible task. But if Pakistan wins it from here, ओए मजा आ जाएगा. हाँ, अभी मीडिया प्रेशर सारा इंडिया के ऊपर है. पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है. मतलब पाकिस्तान तो अंडरडॉग ना यार तैमूर. हाँ, तो मैं कोई पाकिस्तान तो अंडरडॉग. बिल्कुल आप ये समझ लें कि जीरो प्रेशर के साथ गेम पे जाएगा. कि वैसे ही आवाम समझ लेगी यार जीरो प्रेशर लेना ही नहीं ना. हाँ, ये बात को समझाए ना, मेरे जैसा बंदा को साथ हो यार. लिसन the guys listen, 100,000 people are there to back them up. The media and 1.6 billion people or plus about 3 billion people are going to be watching that game. Listen, you just got to go out there and display your talent. Let's put it as simple as that. You know what? This day is not going to come back ever again. And this is the game that you need to be focused on. There's only 3-second game. Shot मारते वक्त 3 सेकंड लगते हैं, बॉल कराते वक्त 3 सेकंड लगते हैं, कैच करते हुए 3 सेकंड लगते हैं. This is a 3-second game. And whole life depends on this game. Reason why you want to be a star, this is the game. You want to be a superstar, this is the game. And you want to do something special for your country, this is the game. People will remember you no matter how many hundreds you have got, no matter what you have done in your life. If you done better on that day, people will remember you for the rest of your life. And I also that's my son. I think जो प्रेशर इंडिया की टीम फील कर रही होगी probably शायद पाकिस्तान की, जाहिर पता है इंडिया पाकिस्तान की टीम में प्रेशर तो दोनों पे होता है. That so many people are around who are looking at us and expecting so much out of us. So I think वो भी इंडिया के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट है तो एक्स्ट्रा प्रेशर भी है. Yeah. No matter whatever you say यार, प्रेशर तो हर बंदे पे होता है. सोशल मीडिया सारे खोल के देखते हैं. अखबार में क्या लिखा, अखबार तो नहीं, खैर अब सोशल मीडिया ही रह गया. अखबार और सोशल मीडिया में देखिए आज क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है.
ना करते हुए बिना रात को सोते वक्त फोन खोल ही लेता है बंदा Yeah. Yeah. कि आज क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है. अरे शोएब भाई, ये मना नहीं होता उनको कि आपने सोशल मीडिया नहीं देखना? That's a good तैमूर, question. फोन उनके हाथ में, मना तो बच्चों को नहीं कर सकते आजकल के दौर में, तो उनको कैसे करेंगे? So I don't think, what the best thing to do, just go to sleep, spend some time with the teammates, have a good laugh, stop thinking about the game. Whatever you're gonna do, do it on that day and this particular that time. Yeah. So it's easier said it done, but pressure दोनों पे होता. Yeah. पता नहीं कैसे स्टार्ट होगा. इंडिया अगर 4-5 विकेटें लूज कर जाए तो इंडिया मारा गया. So I think no matter whatever you say, there is a pressure, there is a restriction on your talent when you come to such big games. I played against India in a many biggest occasion, but you know what? It's just like any other game, yeah. Take it as it is. तो इसमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. अपना 100% दो. Make sure you go out there, bowl as fast as you can, as smartest as you can, bat as smartest as you can. But Indians are looking a bit better. Reason why they are a bit more mature. Yes, they know how to handle the pressure. Rest of the game lies up to one person. Is the captain. Captain should not panic. Now you're hosting the show. You should not be panicking. If Wi-Fi goes away and my son is just playing here and there and distracting me, that's fine. So, but again, I think it's the captain who just deals with the pressure, who releases the pressure on the players, who just tell them, "Yeah, listen, guys, I'm here na, मैं हूं ना यहाँ पे. Relax करो. You display your talent best possible, whatever you can do that. The result अल्लाह पे छोड़ देते हैं. But this is the game. I'm telling you, Pakistan wants to qualify. Pakistan wants to go out there and win this World Cup and wants to qualify the semi-final. This is the obstacle Pakistan needs to cross. Pakistan needs to beat India and one more bigger team. Either Australia, either New Zealand, either South Africa, or out of basically Sri Lanka is, that everybody's going to beat Sri Lanka. Everybody going to beat Netherlands. Everybody's going to beat who else? क्या नाम है? Afghanistan, right? So let's say 9 में से 6 टीमें रहेगी. Yeah. Let's put it this way, ना अभी तक तो नेदरलैंड भी आ रहा है, श्रीलंका भी आ रहा है, बांग्लादेश भी आ रहा है. So this is a tournament of what? 6 teams. So you have to beat the 2 bigger teams. Let's put it this way. You have to beat 2 big teams to qualify. And what better team to beat in this tournament? India. So Shoaib bhai, India Pakistan की बात हो रही है, तो I have to ask, Yes. आपका एक favorite moment इंडिया और पाकिस्तान की मैच में जिसमें आपने खेला हो, कोई heated moment या कोई memory आपको जो आपकी favorite memory है जो वही यार, सबको पता है. आज गूगल कर लेना जाके YouTube. Getting Sachin out on the first ball. Yes. That has to be my favorite moment. I think that So is the that has best to be a... lot of us. नहीं, आप Yeah, I know. जब आप वो आपने विकेट ली थी, आपकी मेरे ख्याल से वो क्या नाम है, पहली विकेट थी तेंदुलकर के खिलाफ. पहली बॉल थी. अच्छा, पहली बॉल थी इंडिया. पहली बॉल. नहीं, मतलब तेंदुलकर के खिलाफ पहली बॉल थी, तो और उसी में आउट हो गया. आप आपके ख्याल में ज्यादा प्रेशर था या तेंदुलकर पे? नहीं यार, मैं तो प्रेशर लेने के लिए पैदा ही नहीं हुआ ना. तो मैं तो प्रेशर देने के लिए पैदा हुआ था. When you're bowling as fast as this, so you're not here to take pressure, you're here to give pressure, either the blood pressure or some other pressures. But the thing is, there is a batsman's always going to be out there wary of me. यार ये क्या फंस गए हम. So I could see that fear through their body language, through their behaviors. I could see that. So I'm not saying Sachin was scared of me. I'm just saying that, he was not well prepared when he's coming to bat against me. So I knew that minute I, released the ball in my hand out of my fingers. So I knew that, this guy is gone. But 100,000 people were there chanting against me, and the 100,000 people were there with the pin drop silence. And the next to the best thing that I came to know, they were throwing stone at me. आपने एक बार पहले भी इस तरह की बात की थी, तो फिर इंडिया में काफी जो है ना बातें चली थी इस तरह की.
कि मैंने अब क्या कहा है? आपने इसी तरह की बात I बता said दी। नहीं, मैंने कहा I'm not saying that he was scared of me, but I'm हाँ हाँ, saying he was पहले भी यही not well prepared of me. But I ये never said that he was scared of me. I never even said that on TV. There is no record of TV that I मैं said he वही was scared of me. बोला था, लेकिन बात चल गई थी। वो मीडिया बात खराब कर देता ना यार। Oh, of उसको तो course. रिवर्सिबल तो नहीं होती चीजें। But again, I never said that. I mean, he's the greatest player of history of cricket. If I can name the three biggest giant that has to be, in my view, कि ये इनसे बड़ा क्रिकेटर दुनिया में कोई नहीं आया। One is Wasim Akram. Period. Simple. I mean, nobody can beat his talent. The skill set that he had, the talent that he possessed, it was amazing. The kind of the mind set that he had, it was amazing. Shane Warne, another legend. I mean, like he is a spinner with the attitude of a fast bowler. And third has to be Sachin Tendulkar. I think these are the people, I think the greatest of all time. And Sachin is like being the greatest of all time. I got him out many times, but he is still the greatest batsman that I ever bowled to. So Shoaib bhai, did you ever have like a proper strategy कि किसी बड़े मैच से पहले de-stress कैसे करना है या अपने आप को कैसे calm down करना है? Because it's known कि मतलब कहते लोग यही हैं कि fast bowlers are a little hot-headed and you were specifically very famous for, you know, being that. No, they made me look like one. Yeah, Yeah. they made you look like one, but you know, did you have like a strategy to sort of अपनी nerves को calm करने के लिए? Like how did you go about it before a big game? I mean, if I was like down and about today, really down and about today. I was thinking, yeah, I was up at 6. I have nothing to do. What should I do now? The मैंने कहा, यार, let's have something mild, some miles underneath my foot. Let's go out for a run. So I ran for at least for 5-6 miles. So उसमें फिर stress कहाँ रहता है? तमकिनत stress भी नहीं रहता, होश ही नहीं रहती. If you wanted to have a clear thinking ever in your life, you know, if you're not able to understand what you're going to go through this, how are you going to go through this, you know, just get in a position of huffing and puffing. The huffing and puffing में one heart rate is touching about 180 170. मेरा तो easily 180 190 चले जाता है. After that हर चीज shut down होना शुरू हो जाती है कानों के साथ. हर चीज रुकना शुरू हो जाती है. You run for 9 miles, trust me, उसके बाद दिमाग में कोई चीज नहीं रहती, सिर्फ ये रहता है अगला सांस कब वापस आएगा. तब सोचना क्लैरिटी के साथ कि मुझे क्या करना है. और मैं कॉन्शियस वाला आदमी हूं. माई कॉन्शियस सेज वन थिंग टू सबकॉन्शियस, लिसन, वी हैव टू डू दिस. माई सबकॉन्शियस कह रहा है नहीं 5 मील भागना आज भाई, ऑपरेशन कराया हुआ है, नी रिप्लेस्ड हुए में, दर्द होगा. मैंने कहा नहीं, करना पड़ेगा. एक्चुअली आई हैव टू टेल माई ब्रेन थ्रू माई हार्ट कि यार तुझे करना है. अगर तुमने माइंड तुम्हारे साथ गेम खेलता ही रहेगा, माइंड तुम्हारे पास गेम खेलता ही रहेगा, ये तुझे बताता ही रहेगा हमेशा. कभी सोच दिमाग से मत सोचना. दिमाग से सोचोगे तुम औरतें, स्पेशली तुम्हारा सबकॉन्शियस बंद नहीं होता. ये तुम्हारा 3 ब्लेडों वाला ग्राइंडर है, कभी बंद नहीं होता. प्लीज इसको समझाओ, बंद हो जाओ. अब मैं दिल से करूंगी. तो जब ये आपने समझाना शुरू किया अपने दिमाग को कि नहीं तुझे करना पड़ेगा, दिस लाइफ इज एज सिंपल एज ब्रीदिंग. If it's more difficult than this, then please stop living. So you never had a time where आप ये आपको तो नींद नहीं आई हो या आप परेशान हो कोई मैच के बारे में, because it's such a big match, you just were relaxed. This was your routine. Look, I'm the fastest in the history of the planet. That's true. So That I is true. give the nightmares and sleepless nights to others. I love Sleepless that. night is sleepless. Sleepless night is not for you, Rakhtar. I Please sleep at इसको peace every time. trademark करें और shirts पे लगाएं. I will wear it. I love this. Yeah, sleepless night for the batsman, not for me. And many batsmen, I could see that they are scared of me, and I could see that. तो मैं उसको और डराता था. मैं कहा मारूंगा जान से, छोड़ूंगा नहीं. So I used to play with their minds. So obviously, yeah, when you're facing about 100 miles an hour ball, yeah, if you get hit, boss, you feel like you hit by a truck, you hit by a brick.
So it's not easy to take that kind of impact. Sorry, Taimur, go on. जी शोएब भाई मैं पूछ रहा था कि चले आपने बता तो दिया कि प्रेशर तो ऑब्वियसली जब आप बॉलिंग करा रहे हैं तो वो तो अगले पे ही होगा, आप पे तो प्रेशर था ही, होता ही नहीं था, लेकिन आपको गुस्सा तो आता होगा ना मैच खेलते हुए या मैच के दौरान, मतलब उस तरह का गुस्सा नहीं कि थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया, मतलब वो वाला गुस्सा कि मैं दिल कर रहा है मैं बैट फड़ के तेरा मुंह पान दिया वाला गुस्सा? नहीं, मैं तो एक्चुअली हरभजन को मारने चला गया था होटल में. I made a key and I was looking for him. मैं आफ्टर द मैच after the match I used to look for the people. so जो कुछ रह गया मैच के दौरान वो खत्म नहीं हुआ तो मैं फिर मैच के बाद I was very verbal, and when I say was very verbal, that means I was very very हाँ harsh वो on the हरभजन सिंह batsman. आपने देखी है मेरे ख्याल से, और हम Yeah, everybody's seen that one. Yeah. नहीं मतलब हरभजन फिर आप जब गए थे तो बचत हो गई थी, कोई बैट शेट टूटा मिला था नहीं या ना, छुप गया Yeah. कहीं पे. Oh no. बल्कि छुप मुझे गया याद कहीं है पे. मेरे ख्याल से हरभजन सिंह ने की स्टोरी सुनाई भी थी कि वो युवराज सिंह वगैरह को ढूंढता रहा था कि मुझे बचा लो. हाँ, मेरा एक्चुअली मजाक का मेरा जो टाइप ऑफ काइंड ऑफ जोक्स दैट आई डू when I get I'm really kind of hyper kind of a guy, you see. तो मेरा शोर यही होता है उठा के लोगों को बैठ पे फेंकना. So he's quite a big unit. So but I'm a very powerful guy. So मैंने उसको 2-3 बेचारे को मारा तो उसकी हड्डी बस लीक हो गई है. तो वो कहता है मुझे मारना प्लीज. सुबह भी मारता है मैचेस में, रात को भी मारता है. चाहता क्या है हमसे. So this is my kind of a love for Indians. So now that you're no longer playing cricket, now you're sort of a spectator like we are, is there anything that triggers you or makes you angry or scream at the TV when you're watching cricket today? Look, my knee hurts when I look at the ground. My knees, both knees are replaced. I've lost 3 ribs. 2 are gone. One is fractured. Vertebra is gone. My elbow's gone. Collarbone is broken. My legs are broken. Ankles are broken. Fibulas are gone. Hamstring are torn off about 6 times. I have taken about 89 injections in my knee. I sprained the knee about 49 times. So, listen, lady, I don't want to go back and look. So when I see the matches such as this now, I feel like jumping out of the sofa and shouting my lungs out. But nowadays I kind of behave. But it's tough to watch the game. I'll be honest with गुस्से you. में आपने कभी रिमोट It's वगैरह not मारा? my cup of tea. नहीं, रिमोट अपने पैसों का ही है ना यार. क्यों अपना पैसा जाया करूंगा. So इतना गुस्सा नहीं आता. नहीं इतना नहीं. मैं बहुत समझदार आदमी हूँ ना. Very sharp businessman at the same time. And so I trade my deals very carefully. और अभी शोएब भाई जितने आपने टीम्स का नाम लिया था कि सिर्फ मेनली तो 6 टीम्स की ही गेम है और बाकी जो है वो टीम जो छोटी टीम्स हैं, अगर उनमें से कोई एक टीम आपने पिक करनी हो कि मे बी इनमें से कोई एक है जो शायद ऊपर आ जाए. I would want Bangladesh to come forward. Yes, I want Afghanistan to come forward, but वो 50 ओवर के खेल नहीं सकते. 50 ओवर उनको भी आता नहीं है. They're still pretty amateurs. But again, I really think that Bangladesh should come forward, or either Sri Lanka, either one of them two. But यार ये टाइम गुजर जाए यार. ये जो 14 फेब है ना, अक्टूबर सॉरी, ये गुजर जाए यार तंग पड़ गए. मैं अभी ग्राउंड में भाग रहा हूँ, मेरे पीछे गार्ड भाग रहा है. सर मैच है क्या बनेगा. मैंने कहा यार मुझे क्या पता. गार्ड मेरे साथ भाग रहा है पीछे. चाचियां ताइयां माइयां काम करने वालियां, आई मीन वर्कर्स, वो पूछ रहे सर मैच है क्या बनेगा. But yeah, I feel sorry for the people that they have to go through in my days and age. Back in the days, never used to have this much of social media, but now day and age, there's a lot of social media, there's a lot of pressure on the current players यार. बेचारे फंसे ये रहते हैं. Shoaib bhai, what are your predictions? फिर मेरे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है. I mean, it's my intuitions होते हैं. That New Zealand is winning the World Cup. I don't know why. Oh. I don't know. My intuitions are kept on saying this. That if somebody deserves this World Cup, either is South Africa or New Zealand. Or I my agree heart with goes you, out to Shoaib say bhai. New is Zealand ke baare mein to, New Zealand. definitely. After what happened to them last time.
Yes. So I believe this is what I wishing for, praying for. But as a Pakistani, I want Pakistan to win. If not Pakistan, then New Zealand should take this World Cup लेकिन ये जो away पिछले by beating India comprehensively. इंशाल्लाह By the way, Shoaib, hi, Absolutely. I have to tell you, my family is from Pindi, like you, but Okay. I'm married an Indian. So we Oh actually have an wow. Indian on in the live with us right now. So, Acha. but my family is from Pindi, and then his family is from Mumbai. So, as you can imagine, the Pakistan India match at our home is like World War III going on. You have such a long career, such a prestigious career. कभी Hmm. ना कभी कोई फैन ने आपको कुछ कहा होगा जिससे आपका बहुत गुस्सा आया होगा, कुछ annoying, कुछ weird, जो आपको आपको क्या याद है किसी ने कुछ नहीं. कहा? I'm blessed to be loved by the both sides. As an Indian, right? Yeah, Shoaib Akhtar Yeah. is of most course. acceptable to across the countries, you see. And I try to speak very balancedly. I speak balance against uh, for India and for Pakistan at the same time. I believe karta hu, yaar, hatred will get you nowhere. So, uh, and then once you're a celebrity, when you're icons, you should always speak with the balance. एंड लोग समझते हैं शायद मैं इंडिया से इसलिए प्यार से बात करता हूँ मुझे पैसे बनाने होते हैं. इट्स नॉट द केस. आई जस्ट genuinely respect Indians. I genuinely respect Hindustan. I genuinely respect their cricketers. But again, when it comes to playing against India, तो मैं हमेशा उनको मारता था, डराता था. I had a huge fan following in India. Thank you very much, once again. So मैच के दौरान कोई दोस्ती नहीं. पपी जफी होगी बाहर बाहर जाके, अंदर ग्राउंड में नहीं. अंदर मुक्के कुसोन मुक्के चलेंगे. तो जो आपने I think 99 में किया था शोएब भाई, that was हाँ amazing. वो हाँ मेरे दिमाग में etched रह गया है बिल्कुल, कभी नहीं भूल सकता मैं वो. That was amazing. हाँ यार बोलना बिल्कुल. चाहिए. तो हाँ, that's a great memory. और सचिन आउट हुए 1 लाख बंदे ने. तो शोएब भाई, हर घर में एक बंदा ऐसा होता है जो मैच के स्टार्ट में इस तरह की बातें शुरू कर देता है कि ये तो लाजमी, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तो कहेगा ये इंडिया ही जीतेगा, और कभी कोई ऐसे कोई बिल्कुल टफ सिचुएशन हो तो कहेगा ये अब नहीं होता हमसे आउट. और इस तरह की जो एक बंदा होता है जो इस तरह की अनोइंग बातें करता है, और अक्सर उसको जो घर में अब्बा होता है उससे मार भी पड़ती है. तो आपके कोई घर में इस तरह का कोई बंदा है आसपास जो मैच नहीं, वेरी पेट्रियोटिक. बातें करता हो कि आप कहते नहीं, हो वेरी पेट्रियोटिक. जिसकी तमकीनत बात की है, ये बंदा भी पेट्रियोटिक होता है, दिल इसका भी अंदर से होता है कि पाकिस्तान ही जीते, लेकिन वो वैसे ही जो है ना जानबूझ के नहीं हमारे यहाँ नो. ये हमारे हमारे घरों यहाँ में अगर पाकिस्तान जीत गया ना, मतलब अगर पाकिस्तान हार गया तो वो कहेगा कि यार मैंने तो बोला था तुम्हें पहले ही कि पाकिस्तान हारेगा. हाँ. और अगर जीत गया तो कि चलो खुशियों में हम भी खुश हो जाएंगे साथ ही. Yeah, it's a लोग भूल win-win. गए. शोएब भाई, डू यू हैव अ स्ट्रेटजी कि अच्छा अब अगर हम जीत गए 14 को जीत गए तो फिर क्या होगा, और अगर खुदा न खास्ता हार गए तो क्या होगा? Let's be humble. Let's be humble. Stay humble. Let them say whatever they have to say. Be humble, be calm, be cool, be nice. The greatest people, the humblest people are the greatest people in the world. So be humble, be nice. It's okay. Don't be disrespectful. If you win, then you win with the dignity. If you lose with the dignity. But make sure you put up a good fight. Putting up a good fight, that what all the man can do. Putting up a good fight. Be a man, yeah. Be an alpha. Alpha put up a good fight, and that's what he does. And but we were kings. Remember back in '98, whenever you used to tell India, "यार जल्दी कर लो, खेलो जो खेलना है, हमने जीतना तो वैसे ही तुमसे." So those days are gone. Shoaib bhai, शोएब भाई, what's your favorite thing about Pakistani team and the least favorite thing? Sorry, Tamuri. हाँ नो, Attitude. When they're showing the attitude, they're the best. They're at their best when they're showing the attitude. When they're not showing the attitude, or they're not aggressive, that is the worst thing. शोएब भाई मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इस बार फिर दूसरी टीमों की जरूरत पड़ेगी कि वो उससे जीतेगा, ये इससे जीतेगा, ये 100%. 100%. पूरा Of course. बनाना पड़ेगा.
पूरा वो आपको माइंड में बनाना पड़ेगा, फिर वो सितारों पूरे पाकिस्तान में ये बात चलेगी कि क्या नाम 100%. हॉलैंड हमारे फिर काम आएगा या हॉलैंड बांग्लादेश आएगा. इंशाल्लाह. Great. Thank you so much for taking out the time to speak to all of us. Like, you are like the pride of Pakistan. We all have so many amazing memories attached to you and your talent. So thank you so much for taking out the time and spending it with us and chatting. Thank you, Shoaib. Thank you very much.